हाय गाइस, सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो जहाँ पे आई वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि ये चैनल बनाने का मेरा पर्पस क्या है। यहाँ लगभग 10 लाख लोग यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं हर साल, एंड ऑन एन एवरेज 1,000 सीट्स होती है। सो बाई शेयर प्रोबेबिलिटी 99.9% आर मेंट टू नॉट सक्सीड इन दिस एग्जाम। एंड मान लीजिए कि 10 लाख में से 1 लाख सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। सो डिस्पाइट वर्किंग सो हार्ड फॉर द एग्जाम, if the right things do not fall at the right place at the right time, just because seats itni kam hai, the probability of you succeeding is very 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 less. And usually क्या होता है कि after giving so many years to this exam, people have lost confidence within themselves, and also they have lost touch with the industry and are unaware of the opportunities that exist in the market. So basically in podcast ke through, I want to bring stories of ex aspirants who have successfully moved on in their professional journeys and are somewhere or the other killing it in their respective professions. So basically in podcast mein I'll ask them questions around how their journey has been, and जो भी profession में वो है, we'll talk about what are the prerequisites of that profession, what are the pros and cons, what are the salary components, the growth aspects, and the impact that they are creating in their respective professions. Along with that, I also want to neutralize the hype that has been built around these government exams. So कोई भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो वो जो 1% सक्सीड करते हैं उनकी भरमार होती है इंटरव्यूज़ की, बट वो जो 99% जो सक्सीड नहीं करते हैं, हु हैव ऑल्सो वर्क सो हार्ड, उनकी बात नहीं होती. ऑल्सो अ लॉट ऑफ कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड से, जैसे अभी ये 12th फेल करके एक मूवी आई है, देयर इज अ वेब सीरीज कॉल्ड एस्पिरेंट्स एज वेल. ये 12th फेल की बात करें, सो द पर्सन हैड एक्चुअली सक्सीडेड इन द लास्ट अटेम्प्ट, विच इज एक्चुअली एन आउटलायर. आई हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ स्टोरीज जहाँ पे someone who has given 4 to 5 interviews and then in the last attempt the person was not able to clear the prelims. So in podcast ke through I want to discuss those stories as well, so that people know when should be the right time for them to give it a break and start looking for other opportunities. जोश इनिशियली तो अच्छा है, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट, बट देन people should not be misleaded into the hype that has been built around this exam. I have kept 2 forms in the description below. The first form is for aspirants who now plan to move on in their professional journeys but are a little confused कि अब क्या करना चाहिए, and are unaware of the opportunities that are there around. So please fill in the form and give some details so that I can connect you with relevant people in the industry. And the second form is for ex-aspirants who are now working in the industry and would like to be a part of this initiative that I'm trying to do. Yes, and as the name suggests, plan B to Z. So basically जिन लोगों का प्लान ए काम नहीं किया है, उनके लिए आई वॉन्ट टू मेक दम अवेयर ऑफ प्लान बी सी डी ई एफ जो एग्जिस्ट करती है मार्केट में, एंड उन्हें अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप आपको करना चाहिए. या सो दैट इज इट. थैंक यू.